discuss a very important topic of thermodynamics, entropy. Entropy is measure of dispersal of energy or disorderness, randomness in a system. For example, in solid state atom or molecules have a definite arrangement, translational motion is phased, so entropy is minimum. A solid is heated and converted to liquid. In liquid state, molecules start movement, but at slow speed and smaller volume. So disorderness arises, but entropy is small. Now liquid is heated and converted to gas, vapor. Now the molecule is moving in a greater volume at greater speed. So randomness or entropy is greater. तो जैसे जैसे हम सिस्टम में एनर्जी दे रहे हैं, डिजॉर्डरनेस और रेंडमनेस बढ़ रहा है, मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है. द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी इज एनर्जी ऑफ द सिस्टम फॉर a degree causing randomness in the system. Energy of the system per degree causing randomness or disorderness in the system. So S equal to energy of system causing disorderness by temperature. Unit of entropy is joule per Kelvin. Entropy is a system is an extensive property in a state function. If a system absorbs Q heat from a temperature T from the surrounding, the change in entropy of the system delta is equal to Q by T, and for a small change d is equal to Q by T. Entropy of phase transition. The entropy change during phase transition. 1 mole of liquid, entropy of vaporization. 1 of liquid converted to gas by absorbing heat as enthalpy of vaporization at melting point of the liquid. So delta is vaporization, entropy in gaseous state minus entropy in liquid state equal to delta is vaporization by T. According to Trooton's rule, enthalpy of vaporization of liquid remain almost constant. It is 88 plus minus joule per Kelvin per mole. If liquid are held by van der Waals force of attraction, मतलब no hydrogen bonding. वैसे हम ये रूल फॉलो. Now entropy of fusion. At melting point of solid or fusion temperature Tf, 1 mole of solid converted to liquid by absorbing heat as delta H fusion. So entropy of fusion delta H fusion is S liquid minus S solid equal to delta H fusion by Tf. Entropy of sublimation. At sublimation temperature, 1 mole of solid directly converted to vapor by absorbing heat as delta H sublimation. So delta H entropy change in sublimation equal to S gas minus S solid and delta H sublimation by Tf. Some numerical example. बस वेरी सिंपल एग्जाम्पल है, क्वेश्चन भी पूछे गए हैं नीट में, खाली यूनिट का ख्याल रखना है. Calculate entropy change when 1 butane evaporates at 341.7 Kelvin, boiling point TB, and enthalpy of vaporization is 29 kilojoule per mole. तो entropy का वैल्यू स्मॉल होता है, इसे जूल पर केल्विन पर मोल में निकलते हैं, 29 किलोजूल मल्टीप्लाइड बाय 1000, कन्वर्टिंग इट जूल डिवाइडेड बाय boiling point. Calculate enthalpy of fusion of ice is latent heat of fusion of ice is this. So melting point of ice is 273 Kelvin and delta H fusion is latent heat of fusion multiplied by molecular mass of water. 1 mole of NaCl on melting absorbs 30.5 kilojoule heat and entropy increases by this. Calculate melting point. So delta Tf delta H fusion by delta H fusion. तो delta H fusion को हम लोग जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं by multiplying with 1000.
Now, entropy change for a chemical reaction. Similar to enthalpy of reaction, sum of entropy of product minus sum of entropy of reactant. One notable thing, हमने इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी एलिमेंट इन सॉलिड स्टेट है 298 केल्विन को जीरो माना था, बट इंट्रोपी इज नॉट जीरो. इसको थर्ड लॉ समझना पड़ेगा. तो डेल्टा एनजी change in number of gaseous mole during chemical reaction is number of gaseous moles of product minus number of gaseous moles of reactant. अब केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के रूप में दिया हुआ, वहां पूछ रहा है कि इंट्रोपी चेंज क्या होगा. तो व्हेन डेल्टा एनजी जीरो तो ग्रेटर देन जीरो, लाइक MgCO3 solid gives MgO solid and CO2 gas. The delta Mg 1 minus 0 or 1. ऐसे केस में entropy will increase. In those reactions like H2, Cl2, say 2HCl gas, number of gaseous moles same है. ऐसे केस में conversion of compound from pure element results increase in entropy. Delta is greater than 0. कुछ नए क्वेश्चन हैं वो तो ऊपर डिस्कस कर चुके हैं. इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस पॉजिटिव होगा. स्टैंडर्ड इंट्रोपी चेंज रिएक्शन हाफ N2 प्लस N. तो ऊपर बताएं इंट्रोपी ऑफ रिएक्शन सम ऑफ इंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ इंट्रोपी ऑफ रिएक्शन करके निकाल रहे हैं. नाउ इंट्रोपी चेंज फॉर ए प्रोसेस डेरिवेशन है जनरल. तो ds इक्वल टू Q by T फ्रॉम फर्स्ट लॉ Q इक्वल टू du प्लस CdV by T, du equal to Cv dt for 1 mole, for n mole it is NCV dt. The ds equal to NCV dt by T, NCV dt by T, और P equal to nRT by V. तो P कैंसिल हो जाएगा, nRdV by V. Now integration between two limits S1 से S2 T1 से T2 प्लस nR dV से V1 to V2. तो डेल्टा S इक्वल टू S2 minus S1 NCV ln T2 by T1 plus nR ln V2 by V1. This is general equation. Now at constant volume V1 equal to V2, so this term becomes 0, ln 1 equal to 0, so delta S equal to NCV ln T2 by T1 or 2.303 NCV log T2 by T1. Now at constant temperature, मतलब T1 equal to T2, so delta S equal to nR ln V2 by V1 or 2.303 nR log V2 by V1 or
from Boyle's law 2.303 nr log T1 by T2. अब एट कांस्टेंट प्रेशर निकाल रहे हैं, जिसको समझिए जरा सा। H इक्वल टू यू प्लस पी भी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, पी डी भी प्लस भी डी टी। तो डी एच माइनस भी डी टी इक्वल टू डी यू प्लस पी डी। तो जो हम लोग लिए थे डी एच इक्वल टू डी यू प्लस पी डी भी बाई टी, तब उसकी जगह हम ले रहे हैं डी एच माइनस भी डी टी बाई टी। और डी एच इक्वल टू डी एच सीपी डी टी एन सीपी डी टी बाई टी माइनस भी की जगह एन आर टी बाई टी, तो भी कैंसिल हो जाएगा, एन आर डी टी बाई टी। इंटीग्रेशन बिटवीन टू लिमिट, तो डेल्टा एस इक्वल टू S2 minus S1 n Cp ln T2 by T1 minus n R ln T1 by T2. So at constant pressure T1 equal to T2, so delta S becomes S2 minus S1 n Cp ln T2 by T1 or 2.303 n Cp log T2 by T1। T1 by T2 वाला तो पहले आप पढ़ ही चुके हैं। अब हम लोग इस पे आ रहे हैं, कंप्लीट स्पेक्ट्रम दिस पॉइंट, X solid at T1, finally X gas at T2. First, X solid T1 heated to X solid Tf. Change in temperature. So delta S1 equal to 1 mole है Cp ln Tf by T1, T2 by T1. X solid converted to liquid. Entropy of fusion. Delta S fusion by Tf. Delta S3. Liquid heated from Tf to Tb, so Cp ln Tb to Tf. The delta S4 entropy of vaporization. Again the S5, the gas is heated from Tb to T2, Cp ln T2 to Tb. तो टेम्परेचर चेंज का ये डेल्टा S1 हुआ, डेल्टा S2 तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है, देन डेल्टा S3, डेल्टा S4 एंड डेल्टा S5. A diamond has Cp. Calculate entropy of diamond weighing 22.4 undergoes change the temperature 25 degrees to 26 degrees. यहाँ फार्मूला NCP ln T2 by T1 और 2.303 n number of mole 2.4 by 12, Cp दिया हुआ 1.45 log T2 by T1 कर दिया। One mole of an ideal gas is compressed to half of its initial volume and simultaneously heated to twice of its initial temperature. तो जनरल इक्वेशन जो निकाले थे nr ln V2 by V1 and Cp T2 by T1. तो delta is equal to compressed to half of its initial volume. तो V2 by V1 हो गया
1 by 2 and heated to twice of temperature, T2 by T1 हो गया 2. सॉल्व करके ये इक्वेशन आएगा. Entropy change for reversible and irreversible process. Very important thing. In a reversible isothermal process, Q heat is transferred from surrounding to system. So delta S system heat ले रहा है तो Q by T और surrounding lose कर रहा है तो minus Q by T. Total change in entropy delta S reversible equal delta S system plus delta S surrounding Q by T minus Q by 2 is 0. So hence entropy change in a reversible process is 0. This is important. Now if a gas is allowed to expand in vacuum in irreversible mode, vacuum opposing force is 0. So work done by the system is 0. So no heat is transferred from the system to surrounding. So entropy change of surrounding is 0 and in entropy को state function है, चाहे वो change reversible manner में हो या irreversible manner में हो. तो delta S system volume change के लिए 2.303 nr V2 by V1 for expansion V2 greater than V1. So delta S system is greater than 0. So delta S irreversible system plus surrounding is greater than 0. So all irreversible processes are accompanied by increase in entropy. Thank you. Subscribe my channel, press the bell icon and share with your friends all this